Good afternoon, my dear students. First of all, I welcome you into my YouTube channel and Talukdar Maths. Okay. In the last few classes, I have continued with my topic that is called compound angles, multiple and submultiple angles. Okay. So, with continuation of this particular classes, today I am going to take another class on the topic that is called compound, multiple and submultiple angles. Here I am going to discuss about few important questions and very interesting questions. Okay. So, I hope you will enjoy the class really. Now, before going to take the class or starting to solving the problem, I have to discuss a particular concept that is called, here it is named as componendo and dividendo. Okay. Componendo and dividendo. What actually componendo and dividendo is, you got in school. Okay. So, suppose that this ratio A by B equal to what? C by D. Then you can write A plus B. Numerator is added to denominator A plus B divided by A minus B. Numerator minus denominator. Okay. The same pattern should be followed in the right hand side also. Left hand side में जो हमने इन क्या है, एक एक्शन क्या है ना, जो एक्शन क्या है वो सेम एक्शन वी हैव टू परफॉर्म इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो. दैट मीन्स न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर, यू विल गेट दिस रिजल्ट. देन न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर इज इक्वल टू व्हाट? यू गेट C minus D. So this is the componendo and dividendo. Or you can write in this manner also. First numerator minus denominator, then numerator plus denominator. Or many a time in many questions you will get like, suppose that from here you can get also B plus A, or suppose B minus A or divided by B plus A equal to D minus C divided by D plus C. You can use this type of way also. This is also called componendo and dividendo. Denominator minus numerator divided by denominator plus numerator, you get the result. Similarly, denominator minus numerator, you get this result. Denominator plus numerator, you get this result. Okay. You can use this, you can use this, you can use this as per your desire of the problem. आपकी प्रॉब्लम जो है उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज़ करेंगे. और यू कैन रिवर्स इट, B plus A by B minus A, D plus C by D minus C लिख सकते हो. तो whenever we do such type of that is activities in solving the problems, you have to understand that it is nothing but componendo and dividendo. Okay. So before going to solve this, I have discussed it such that you have no confusion in solving the problem. Also, I have given a formula to you, cos 2 theta or cos twice A. Cos 2 theta in terms of what? Tan. Cos 2 theta equal to what? 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. This is twice theta, its half is equal to what? Theta. Its half equal to what? Theta. This is twice theta, it is also theta. Okay. So in the same pattern, if twice theta in place of twice theta, if it is theta, then what is the expansion of cos theta in terms of tan? Cos theta equal to what? 1 minus tan square theta by 2. What is the half of this angle theta? Half of this angle is what? Theta by 2. It is half of this angle is what? Theta. So pattern should, you have to understand the pattern of the particular formula. Okay. Cos theta equal to what? 1 minus tan square, half of this angle is what? Theta by 2. Similarly, 1 plus tan square, half of the angle is what? Theta by 2. Okay. So you can use the formula in this pattern. Okay. So this formula is important. Here I am going to use it. So that's why I just remind you that what actually formula is and why componendo and dividendo. How you can use componendo and dividendo in a particular problem. Okay. So let us start to solve the questions. So I want to finish the chapter today and then I will continue with trigonometric solution of trigonometric questions. Okay. Next video lecture I will going to conduct the class on trigonometric equation. Okay. Now first question is very interesting question. If tan theta by 2 equal to
root over 1 plus e 1 minus e by 1 plus e into 10 alpha by 2. Okay, then you are to prove that cos alpha equal to what? Cos theta minus e divided by 1 minus e cos theta. Okay, this is the particular that is called question. Okay, starting with given condition. Okay, from here given tan theta equal to what? Tan theta by 2 equal to what? Root over 1 minus e divided by what? 1 plus e into tan alpha by 2. This is given. Okay, this is given. If you squaring both sides, you will get square करेंगे तो क्या होगा? tan square theta by 2 equal to what? 1 minus e by 1 plus e. स्क्वायर करने से ये रूट ओवर कैंसिल होगा and this will be tan square alpha by 2. I hope you understand. Just squaring both sides. तो आप लिख सकते हो squaring. You can write what? Squaring. Okay. Now from here tan square alpha by 2 can be written as, ये क्या होगा? दिस पर्टिकुलर फिगर क्या होगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा. इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई देन व्हाट हैपन? 1 प्लस ई विल बी इन द न्यूमरेटर एंड 1 माइनस ई विल बी इन द डिनोमिनेटर इनटू व्हाट? tan स्क्वायर थीटा बाय 2. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज़ वेरी सिंपल. सो ये जो फिगर है लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. क्या होगा? when it will come 1 plus e will be in the numerator, 1 minus e will be the denominator, and tan square alpha by 2 equal to 1 plus e divided by 1 minus e into this. Okay, हो गया? Which can be written as what? You see tan square alpha by 2 equal to, this can be written as what? 1 minus e and here 1 plus e into what? Tan square theta by 2. Okay, theta by 2. And in this particular result there is a denominator is what? 1. There is a denominator is what? 1 plus e. Here I am going to use what? Component 2 and dividend 2. Okay, what we will do? Denominator minus numerator. क्या लिखेंगे ऊपर में? 1 minus tan square alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha by 2. Okay, I am using what? This is suppose a and this is suppose b. b minus a divided by b plus a. तो सेम पैटर्न शुड बी फॉलोड इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो. राइट हैंड साइड में भी सेम रिजल्ट फॉलो करना होगा. ठीक है, तो नीचे क्या है? 1 माइनस ई. सो 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई इंटू tan square theta by 2. Hope you are understanding. Okay, divided by 1 minus e plus 1 plus e into what? Tan square theta by 2. Okay, understood? What happened here? What we have done? This 1 minus this is suppose of the type a by b equal to c by d type. Okay, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a by b, राइट हैंड साइड क्या है? c by d. तो उसमें क्या रिजल्ट होती है? b माइनस a divided by b plus a equal to d minus c divided by d plus c. I hope you understand. Denominator minus numerator divided by denominator plus numerator. So whatever be the pattern you have followed in the left hand side,
you must follow the pattern in the right hand side. Okay. Clear? So this particular concept I have used here. So you have to write in this problem using component do and divide into. You have to mention this particular part. Okay. Now you can write left hand side is what? You see 1 minus tan square by alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha by 2, which equal to what? You can write cos alpha. Okay, like what is the formula for cos theta in terms of tan theta? 1 minus tan square by 2, tan square theta by 2 plus 1 plus tan square theta by 2 equal to cos theta. So here it will be alpha. Left hand side is cos alpha. Now there is some arrangement in the right hand side. Okay. What we will do? You take common. So if you expand it, you will get 1 minus tan square theta by 2, and if you take e common, माइनस ई कॉमन. ओके, इसमें माइनस ई कॉमन ले तो क्या होगा? इसमें 1 होगा और इसमें क्या होगा? माइनस होगा, प्लस होगा. ठीक है. डिवाइडेड बाय इन डिनोमिनेटर यू सी 1 प्लस, बीच में प्लस है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा. एंड इफ यू टेक माइनस ई कॉमन, इसमें अगर माइनस कॉमन ले तो इसमें प्लस है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. यू मे गेट सम कन्फ्यूजन हियर, यू मे गेट सम कन्फ्यूजन. आप क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेंगे, एक स्टेप एक्सपांड करके आप ये कर सकते हैं. आई हैव डन डायरेक्टली. ओके, from this step cos alpha equal to what? My aim is to get what? Cos theta. Cos theta मिलने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए? Cos theta equal to what? 1 minus tan square theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2. Okay, you can get it. Now I am dividing every term, left hand side and right hand side, left hand side and right, I'm sorry, numerator and denominator by what? 1 plus tan square theta to get this particular result. ये result मिलने के लिए क्या करना है? हमें इस टर्म को, this term is divided by 1 plus tan square theta, this term is divided by 1 plus tan square theta, this term is divided by 1 plus tan square theta, and this term is also, I think this is minus. Okay, when you take minus common, there will be minus होगा, इसमें minus होगा. ठीक है, 1 minus tan square theta by 2. Clear? So cos alpha equal to, after dividing it will be what? 1 minus this is minus, it is also divided by what? 1 plus tan square theta. तो इसमें डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है? इसको डिवाइड करने 1, आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स फुल टर्म को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. व्हेन यू डिवाइड दिस होल टर्म by 1 plus tan square theta by 2, then it will be 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2, और इसमें क्या होगा? 1 plus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. This one and this one क्या होगा? कैंसिल हो जाएगी because they are same, and ultimately it becomes 1. तो e into 1 क्या होगा? e रहेगा. So no need to do this. Okay, आप डायरेक्ट करें. So I have shown it because of your understanding. Clear? Similarly इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा. सो
पूरा डेनोमिनेटर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड करें तो आफ्टर सेपरेशन व्हाट हैपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये क्या होगा 1 होगा ओके एंड दिस इज ई इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड जस्ट मेंशन हियर डिवाइडिंग numerator and denominator by 1 plus ten square by 2 okay 10 square theta by 2 so you have to mention this dividing numerator and denominator by what 1 plus 10 square 1 plus 10 square theta by 2 after dividing you will get this result okay so which equal to cos alpha and you know this is nothing but cos theta minus e divided by 1 minus e cos theta okay which is our desired result okay which is our desired result okay तो आप लोगों को फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो पर्टिकुलर स्किल जो होती है ये स्किल आप लोगों को डेवलप करना है एंड यूजिंग द फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम ओनली यू कैन अप्लाई उसमें जो स्किल होती है वो स्किल आप डेवलप कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस ओनली मोर टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू डू दैन यू सी ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस फॉर्मूला इज अप्लाई हाउ दिस फॉर्मूला इज अप्लाई ओके सो आई होप फ्रॉम दिस स्टेप से आप जो नेक्स्ट स्टेप में आए थे वहाँ में थोड़ा सा उसको एक्सपांड कर लीजिएगा इसके बाद यू हैव टू टेक कॉमन ऑल द टर्म नॉट कंटेनिंग ई एंड अगर ई वाला जितने टर्म हैं ई कॉमन लेके सेपरेट कीजिए इसके बाद वो जो रिजल्ट मुझे मिला था वो मिलेगी और इसका नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा why 1 plus 10 square theta because after dividing you will get such type of result and which is the formula cos theta okay I hope you understand and this problem is very very important for you okay thank you so next I moving ahead with the next problem every step to be noted down properly go through the videos then you understand every step and when you understand every step there will be no confusion for you and you will get confidence okay in solving the problem so let us solve another question question is it is like in your ncert textbook if 10x very interesting question 10x is equal to what minus 4 by 3 x lies in the second quadrant then find the value of 10x by 2 cos x by 2 and sin x by 2 okay these are the values you are to find what is x x lies in the second quadrant so one thing you see second quadrant means what in this quadrant okay x lies in this quadrant this means this quadrant if any angle x lies it will be less than what greater than what pi by 2 and less than what pi okay less than what pi it means what x lies in the second quadrant means the range of x is pi by 2 to what pi okay it is greater than pi by 2 and less than what pi so from here you can write side में लिखिए x lies in the second quadrant therefore pi by 2
less than x less than what? Pi. Now your sum angle are what? X by 2, x by 2, x by 2. You have to find the trigonometric ratio of tan cos sine of x by 2. Okay, so if you divide by how to get x by 2, if you divide every term by every term by 2, उसको अगर 2 से डिवाइड करें, ये क्या होगा? पाई बाई 4. इट विल बी x by 2 less than what? Pi by 2. Okay, understood? Now this angle lies where? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. x by 2 lies, this is what? Pi by 4. This is what? Pi by 2. मीन्स आपका जो एंगल है x by 2 है, पाई बाई 4 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है. दैट मीन्स व्हाट हैपन? अप टू दिस लेवल व्हाट? पाई बाई 2, एंड इन दिस लेवल व्हाट? पाई बाई 4. सो पाई बाई 4 से पाई बाई 2, दैट मीन्स योर एंगल x by 2 is what? Lies in this part. Okay, and therefore this x by 2 lies in where? First quadrant. You can say x by 2 lies in first quadrant. From here you see x by 2 lies between pi by 2 and pi by 4. means what? 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से बड़ा एंगल, जैसे 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, ऐसा कुछ होगा. एंड दिस टाइप ऑफ एंगल आर लेस देन 90 डिग्री एंड हैंस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, तो आप लिख सकते हो x by 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. x by 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये आप लोगों को चाहिए. ठीक है. नाउ स्टार्ट विथ tan x. गिवन tan x इक्वल टू व्हाट? -4/3. तो tan x का वैल्यू नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज इट इज़ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है? tan नेगेटिव है. तो हमें x से x by 2 निकालना है. तो एक फॉर्मूला या डिस्कस करें. ये फॉर्मूला है, आपको पता है, tan twice x इक्वल टू 2 tan x डिवाइड बाई 1 minus tan square x. ओके, you know it. If this is the angle twice x, its half is what? X. Its half is what? X. So this is the basic formula. tan twice है क्या था? 2 tan n divided by 1 minus tan square है. So tan twice x, so 2 tan x by 1 minus tan square x. Okay, if it is x, ये twice x ना होकर x हो जाए, तो उसका हाफ क्या होगा? x by 2 होगा. So tan x can be written as what? 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. So you can write tan x is equal to what? 2 tan x by 2 divided by what? 1 minus tan square x by 2, which is equal to what? -4/3. Understood? क्रॉस मल्टीप्लाइंग करो, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 tan x by 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 tan square x by 2. I hope you understand. Cross multiplying only. Okay, so 3 tan x by 2 equal to -2 plus 2 tan square x by 2. Okay, then from this step you see ये -2 होगा. If you pick up all the term, this term in the right hand side, आपका क्या होगा? 2 tan square x by 2 minus 3 tan x by 2 minus 2 equal to what? 0 होगा कि नहीं? ये जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये तो प्लस है, ये तो माइनस है, ये भी फिर माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 0 होगा, एंड ये ऐसा हो जाएगी. ठीक है. सपोज दैट tan x by 2 इक्वल टू what? Y. We suppose that what? tan x by 2 equal to what? Y.
then it will be 2y square minus 3y minus 2 equal to 0, which is a quadratic equation, and you know how to solve a quadratic equation by factorization. 2 into minus 2 minus 4 होगा, सो मिडिल टर्म फैक्टराइज एक्सपांशन करें, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 4y प्लस वाई, ओके, माइनस 4y प्लस वाई माइनस 3y होगा, माइनस 2 होगा. यू सी माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस 4 इंटू 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो माइनस 4. तो ठीक है, एक्सपांड हमारा मिडिल फैक्टर. यू कैन टेक कॉमन y minus 2 and here 1 common y minus 2. From here you can write twice y plus 1 into y minus 2 equal to 0. From here you can write twice y plus 1 equal to 0 or y minus 2 equal to 0. From here you can write y equal to minus half or y equal to 2. I hope you are understanding this part is school part. You have easily understand how I get it. Okay. From there you can write actually what is your y? Y is what? 10x by 2. 10x by 2 is equal to what? Minus half and or 10x by 2 equal to 2. Now there are two values of 10x by 2. One is negative, another is positive. Is it feasible for x by 2, 10x by 2 is equal to minus half? You have to think over that where x by 2. मैंने पहले आप लोगों को ये पार्ट कराया है. x by 2 lies ultimately in what? First quadrant, because it is lying between 45 degree and 90 degree and therefore it is इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल हो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. सो tan ऑफ x by 2 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. इसमें तो नेगेटिव हो गया, तो आप लिखेंगे ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो क्या रिजल्ट होगा? 10x by 2 इक्वल टू ओनली 2 होगा. ये तो पॉजिटिव है, ये हो सकता है. ठीक है, देयरफॉर अल्टीमेटली यू गेट 10x by 2 इक्वल टू 2. यस, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 by 1. कैन आई राइट दिस? नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द राइट एंगल ट्राइंगल. आई एम ड्राइंग ए ट्राइंगल हियर. ओके, दिस इज 90 डिग्री. दिस एंगल सपोज x by 2, tan of something. ठीक है, एंगल. ठीक है, इफ इट इज x by 2 देन दिस इज बेस and this is what? Perpendicular. This is what? Perpendicular B. ये suppose the B है कि नहीं? So tan x by 2 क्या होना चाहिए? Perpendicular by base. आप लोगों को पता है perpendicular by base. इसमें कैसा है? tan x by 2 equal to 2 by 1. तो इस हिसाब से आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो what is the value of P? Value of P is what? 2. What is the value of B? It is what? 1. Understood? Now this is given by Pythagoras law. You can find this. Okay, this is H. Okay, तो Pythagoras law यूज़ करें तो क्या होगा? Pythagoras law यूज़ करें तो क्या होगा? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है? 4 होगा. b स्क्वायर क्या है? 1 होगा. तो h इक्वल टू वाट? रूट ओवर 5 होगा. माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस तो नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ ए लेंथ. हाँ, इट इज़ ए लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. कोई हाइपोटेनस एक लेंथ होता है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव साइन नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव होगा. ठीक है, h इज इक्वल टू रूट 5. तो ये क्या हो गया? रूट 5 हो गया कि नहीं? तो आपकी क्वेश्चन में क्या था? यू आर टू फाइंड 10x by 2, sin x by 2 and cos x by 2. नाउ 10x by 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई व्हाट? परपेंडिकुलर बाई आई मीन बेस. देयर वाज sin x by 2 इक्वल टू व्हाट? फ्रॉम द फिगर sin x by 2 इक्वल टू व्हाट? हाई p by h. ओके, p by h. p कितना है? p है 2, h कितना है? रूट 5 हो गया.
and cos x by 2 equal to what? Base by hypotenuse b by h. You can say this is b, this is a and this is c. Okay, name कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Understood? So cos x by 2 equal to what? B by h, and b by h equal to what? B by h is equal to what? B is what? 1, h is equal to what? Root 5. Okay, so you see how can easily we can find out the value of tan x by 2, sin x by 2 and cos x by 2. Basically I use the formula tan twice x equal to 2 tan x divided by 1 minus tan square x. X is replaced by what? Twice x is replaced by what? X. तो राइट हैंड साइड क्या हो गया? x by 2 हो गया. इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. इसके बाद फैक्टराइजेशन करने के बाद ये मिला. ये रिजेक्टेड है बिकॉज tan x by 2 इज एन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो माइनस वो नहीं हो सकता. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल इज व्हाट? ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पार्ट नेग्लेक्टेड. ये पार्ट होगा tan x by 2 इक्वल टू 2. 2 कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 by 1. तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये अगर x by 2 है, कोई भी एंगल x by 2 हो, तो ये x by 2 है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा. तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो p का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 1 होगा. पिथागोरस लॉ यूज़ करें तो हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी. एंड देन फाइनली व्हाट हैपन? sin x by 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. यू नो दिस 2 by root 5 and cos x by 2 equal to base by hypotenuse 1 by root 5. So easily we can find out the solution of this type of equation. Okay, so hope you understand. If any such type of equations will come, maybe suppose you have given sin x by 2. अगर आपको कहा, आपको अगर ऐसा होता है sec x by 2 निकालो, you have to find what sec x by 2. तो sec x by 2 क्या है? h by b, hypotenuse by base. तो आपका आंसर क्या होगा? रूट 5 होगा. You can find out the other trigonometric ratio also. Okay, so this is the way of solving such type of problem. Very, very important thing is that this is the right angle triangle. Okay. Okay, next question of today's class. Next question I proceed. Prove that 4 sin theta plus into sin pi by 3 plus theta into sin 2 pi by 3 plus theta equal to what? Sin 3 theta. Okay, this is you are going to prove. Very, very nice question. So to solve this, you have to take left hand side is equal to what? 4 sin theta into sin pi by 3 plus theta into sin 2 pi by 3 plus theta. Before going to solve this particular question, I remind a particular formula to you. Formula is 2, you know that cos a plus b minus cos a minus b. ये जो रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिया था, क्या था? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? -2 sin a इंटू साइन बी. अगर राइट हैंड साइड में माइनस ना हो, हम प्लस बना ले, तो दोनों साइड में क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये माइनस इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी. इसमें क्या होगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 2 sin a इंटू साइन बी. अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो इसमें a माइनस बी से शुरू होगा. ठीक है, अंडरस्टूड. ये फॉर्मूला आप लोगों को दिया था मैंने. सो 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट हियर. 2 sin theta into 2 is multiplied 2 sin 2 pi by 3
plus theta into sin pi by 3 plus theta, okay, which equal to 2 sin theta into 2 sin A into sin B. I have written where A equal to mention where A equal to 2 pi by 3 plus theta and B equal to pi by 3 plus theta. I suppose that A equal to what? 2 pi by 3 plus theta and B equal to what? Pi by 3 plus theta, and then it becomes 2 into sin A into sin B. तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला में आ गया कि नहीं? सो दिस व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 sin A sin B equal to what? Cos A minus B minus cos A plus B. Try to understand, go through the videos thoroughly such that you can understand every step. So 2 sin A sin B is equal to, use this formula, okay, from here to here you can write cos A minus B plus minus cos A plus B. Okay, I hope you are understanding. Now from here you can now this will be two sin theta. Now what is A minus B? A minus B क्या होगा? A plus B क्या होगा? वहाँ से निकाले A minus B क्या है, चेक कर लो. A minus B 2 pi by 3 plus theta minus pi by 3 माइनस थीटा. ये थीटा थीटा कैंसिल होगा. 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 क्या होगा? पाई बाई 3 होगा. तो क्या होगा? ए माइनस बी कॉस. ए माइनस बी मीन्स व्हाट? कॉस पाई बाई 3. ओके, एंड व्हाट इज ए प्लस बी? ए प्लस बी क्या? प्लस करेंगे तो दोनों क्या होगा? इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस होगा. अंडरस्टूड? एंड फाइनली यू आर गेटिंग दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 एलसीएम लेने से क्या होगा? 3 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा एंड विच इज इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा. होगा कि नहीं? पाई प्लस 2 थीटा. सो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? माइनस कोस पाई प्लस 2 थीटा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, वेरी नाइस वन. How from this formula we get this and how we are getting A minus B and A plus B? This is simple. खाली एडिशन करें और सब्ट्रैक्शन करें, आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है. Now pi plus 2 theta is any angle. Okay, it is an definitely acute angle. 2 theta is any angle pi plus 2 theta. ठीक है. So pi is up to this plus 2 theta means what? This is the angle pi plus 2 theta. Understood? Lies in third quadrant. Lies in what? Third quadrant. In third quadrant में क्या होता है? cos क्या होता है? नेगेटिव होगा. 2 sin theta and cos pi by 3 means what? Cos 60 degree which is equal to what? Half. तो cos pi plus 2 theta, उस pi plus 2 theta से इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव आएगा. नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव. एंड ऑल्सो वी नो दैट if an integral number is multiplied with pi, suppose 1 हो या 2 हो या 3 हो, for all this there will be no change of trigonometric ratios. cos change नहीं होगा. cos will remain as cos. तो उसके साथ cos थीटा होगी. ठीक है. and this mean we are using the formula cos pi plus theta equal to what? minus cos theta. दिस इज द फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड. इसमें टीटा के जगह में क्या है? ट्वाइस टीटा है. टीटा के जगह में क्या है? ट्वाइस टीटा है. तो माइनस कॉस ट्वाइस टीटा होगा. माइनस से क्या होगा? प्लस होगा. विच इक्वल टू, इफ़ यू सेपरेट द ब्रैकेट को रिमूव करें, दिस इंटू दिस, हाफ इंटू 2
कैंसिल हो गया, क्या होगा साइन थीटा होगा फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म, दिस इंटू दिस मीन्स 2 sin theta into cos 2 theta. Now again we are going to use another formula. So you see in this particular question means different type of formula I have applied. तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को मैंने चूज़ किया है कि आप लोगों को इस टाइप प्रॉब्लम में एक स्किल बढ़े, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। यू नो ए फॉर्मूला 2 sin a cos b, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, 2 sin a into cos b equal to what, sin a plus b plus sin a minus b. I hope you understand. इसको अगर एक्सपांड करे तो कैंसिल होगा, एंड फाइनली यू गेट 2 sin a cos b. 2 sin a cos b इक्वल टू व्हाट, sin a plus b plus sin a minus b. तो इसमें ये यूज़ कर सकते हो, ये sin थीटा इक्वल टू व्हाट a, ट्वाइस थीटा इक्वल टू व्हाट b, 2 sin a cos b, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, sin थीटा प्लस sin a प्लस b मीन्स थीटा प्लस 2 थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 थीटा a माइनस b, ओके, a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, sin थीटा प्लस sin 3 थीटा plus sin what, minus theta minus 2 theta equal to what, minus theta, and you also know that sin minus theta equal to what, minus sin theta. So finally we can write sin theta plus sin 2 theta minus sin theta, okay, this one that one cancel, and final result will be sin 2 theta, okay. So in this way, I'm sorry, sin, this is 3 theta, okay, this is 3 theta, this is theta, which equal to what, right hand side, hence you final result you get, okay. This way you can solve the particular question. So in this particular question 2-3 formulas we have utilized and ultimately reach our target, okay. So this is the technique of solving such type of problem. More you solve the problem, more skill you will develop, okay. So you will not get any confusions once you will make yourself expertise, okay. Practice more, okay. I repeatedly tell you, practice and practice makes yourself perfect, okay. More practice is required. 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया और आप समझ लिया कि मेरे को हो जाएगा, एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूजन आएगी, तो इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करें, मैथ्स के साथ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ जाएगी इस सब्जेक्ट में, ओके. सो आई हैव सॉल्व 3 important questions today. I want to give 2 homework to you, and I have seen that many of you do not follow the directions, you are not sending your homeworks, okay. I mean, and few students are very much enthusiastic, they are very sincere, and they are responding very well. I really appreciate all these students. So today I am going to give 2 homeworks today, 2 homeworks to you, and hope you will we can solve these 2 questions, and also you have to share, that is your homework with your video content and upload in the group, okay. Question is, and if anybody have any doubt, you can give an SMS to the there is a comment box में SMS कर सकते हैं कि you have a doubt, so I will clear your doubt, okay. Question is that if 10 theta by 2, this is a question I have already solved, same type of question. I hope you can do it. A plus b by m minus b root over into 10 alpha by 2. Prove that. You can prove that what, cos theta equal to what,
a cos alpha plus b divided by a plus b cos alpha. You are going to prove it, okay? Next question, prove that cos x minus cos y whole square, this is your question in NCERT, sin x minus sin y whole square equal to what? 4 sin square x minus y divided by 2. So this is the question you are going to solve, okay? This is the homework, 2 question, number 1 and number 2. Everybody try to solve this particular 2 questions. If you do at your own, then I'll be very happy, and if you do not, then you can ask me your doubts, okay? So hope for the best. Thank you very much to watching my videos, and all the best for the day, and have a good day ahead. Thank you.